जय जगन्नाथ। मो चैनल मो पाठशाला को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। चलतु आज जाना 5 मार्च 2025 करेन्ट अफेयर। फास्ट जाना नेशनल न्यूज। पीएम मोदी इनागुरेटेड्स बंतारा an animal rescue and conservation center in Gujarat. Prime Minister Narendra Modi inaugurated Bantara, a state-of-the-art animal rescue, conservation and rehabilitation center in Jamnagar, Gujarat. जामनगर तो मन रही एबे अंबानी सारंकर पुअर मैरेज होता जामनगर। तो पीएम मोदी इनागुरेटेड बंतारा an animal rescue and conservation center in Gujarat, जामनगर। एथिरे कौन कौन फैसिलिटी अच्छी? फैसिलिटीज आर द सेंटर्स वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल which includes MRI, CT scan and ICUs and observed treatment procedure including an Asiatic lion undergoing MRI. His visit reinforced India's commitment to wildlife conservation and the protection of endangered species. New Global Alliance for Sustainable Growth led by India. India launched the Cities Coalition for Circularity C3. Cities Coalition for Circularity on March 3, 2025, promoting sustainable urban development through city-to-city collaboration, knowledge sharing, and private sector partnership. The initiative aligns with India's Pro-Planet People P3 Pro-Planet People approach focusing on 3R principle: reduce, rescue and recycle and circular economic practice with global participation. C3 aims to enhance waste management and rescue efficiency. Next point, India's first river dolphin population survey. Key finding: India's first comprehensive river dolphin survey 2021 to 23 recorded 6,327 river dolphin, including 6,324 Gangetic dolphin and 3 Indus river dolphin. এটা किए कंडक्ट करोजी? कंडक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंडियास रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे को कंडक्ट करोजी। एंड द सर्वे कवर्ड 4,406 किलोमीटर्स इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स एंड 101 kilometers in the Beach River. The findings were announced by PM Narendra Modi during 7th National Board of Wildlife meeting at Gir National Park. Gir National Park आमर गुजरात अच्छी एटा गोटे मन रखा। नेक्स्ट पॉइंट, India's leadership in green hydrogen, key development and future goal. Union Minister Prahlad Joshi highlighted India's commitment to green hydrogen at the launch of the country's first hydrogen powered truck trial in the New Delhi. आमर केते 5 MMT of green hydrogen annually by 2030. Install 60 to 100 GW of electrolyzer capacity and reduces 50 MMT of CO2 emissions. The first fleet of hydrogen power truck will be operated on key routes with Indian Oil Corporation. मन रखिया पड़िबो हमर इंडियास लीडरशिप इन ग्रीन हाइड्रोजन ने हमर फास्ट ऑपरेट करछि के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सेटिंग ऑफ हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस इन फरीदाबाद, बडोदरा, पुणे एंड बालेश्वर. Next point, Supreme Court advocates for disability rights as fundamental rights. एटा गोटे मन रखा पड़ो. सुप्रीम कोर्ट advocate for disability rights as a fundamental rights. On March 4, 2024, the Supreme Court of India ruled that the right against disability-based discrimination is a fundamental right. Aligning with the Rights of Person with Disability Act 2000
मन रखिया पड़ो डिजेबिलिटी एक्ट 2016 द जजमेंट अलाउ visually impaired candidates to participate in judicial service recruitment, reinforcing equal opportunity and reasonable accommodation delivered by Justice J.V. Paradwal and R. Mahadevan मन रखा पड़ो आमर विथ डिजेबिलिटी एक्ट 2016 अनुसार एटा गोटे फंडामेंटल राइट जो एडवोकेट फॉर डिजेबिलिटी आउ एटा आमर को जस्टिस जे.बी. परिडवाल एंड आर. महादेवन। नेक्स्ट पॉइंट Chhattisgarh budget 2025 emphasize on capital expenditure reforms and welfare scheme. Chhattisgarh budget 2025 Finance Minister O.P. Chaudhary on March 4, 2025 amount 1,65,000 crore focusing on capital expenditure, digital governance, infrastructure and welfare scheme। मन रखिबा छत्तीसगढ़ बजेट रे हमर छत्तीसगढ़ फाइनेंस मिनिस्टर O.P. चौधरी अछंती जे के अनाउंस करिसंती 1,65,000 करोड़ फोकसिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिजिटल गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर स्कीम सेतिके। Next point agreement news CII IGBC CII means Indian Confederation of Indian Industry, Indian Green Building Council and Indian Overseas Bank मन रखिबा Indian Green Building Council and Indian Overseas Bank have signed a memorandum of understanding to provide accessible financing for IGBC फुल फॉर्म है आमर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट जी बैंकिंग न्यूज RBI's update on exchange and deposit 2000 note। The Reserve Bank of India has kept the window open for the exchange and deposit of 2000 नोट्स मन रखा यहाँ RBI आउ थे एक्सटेंस करिछि जो आमर 2000 टंका नोट एक्सचेंज आउ डिपोजिट पाए। नेक्स्ट पॉइंट इकोनॉमिक न्यूज इंडियन सर्कुलर इकोनॉमिक $2 trillion market and 10 billion jobs by 2025। India's circular economy is projected to generate over 2 trillion in market value and create 10 million jobs by 2050। बहुत सारा जॉब बाहर 10 million jobs by 2050। Shifting from a take make waste model to a sustainable reuse and recycling system as highlighted by Union Minister Bhupendra Yadav at 10th Regional 3R and Circular Economic Forum। Next point why India's agriculture trade surplus is shrinking। India's agriculture exports have grown steadily, especially in basmati rice, spices, coffee and tobacco, but a sugar in important of surpluses and edible oils has significantly reduced the agriculture trade surpluses। The trade surpluses which peaked at 27.7 billion in 2013 and 14 declined to 16 billion in 2023 and 24। एटा टिके कमी जाइछि आमर 13-14 अपेक्षा आमर 23-24 रे कमी जाइछि। 13-14 रे थिला आमर 27.7 आउ 23-24 रे 16। Despite a 6.5% rise in export to 37.7 billion, factors like global price in fluctuations, government restrictions and production variations continue to impact India's agriculture and trade balance। ये गोटे जिनस मन रखा पड़ो आमर इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लस सिंकिंग होमर केते 2013-14 थिला 27.7 बिलियन आ 2023-24 अच्छे 16 बिलियन।
1 in 3 Indians could be obese by 2050. आमर तो जानते ए माने बहुत सारा लोक आम ओबेसिटी होची माने जोटा कि आमर ओजन बहुत बढ़ी जाउची आमर हाइट आ वेट बहुत एपट सेपट होची आमर केते अछंती दी स्टडी पब्लिश्ड इन लैंसेट प्रेडिक्ट एसएफ इज साइज ओबेसिटी इन इंडिया विथ नियरली 44.9 करोड़ पीपुल 44 से आमर होचंदी मेन 21.8 एंड वोमेन होचंती 23.1 नेक्स्ट पॉइंट को जीवा आमर ऑस्ट्रेलिया रो आमर स्टीवे स्मिथ जी कि आमर क्रिकेटर सी आमर रिटायर कर स्टीवे स्मिथ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल मन रखा पड़ो यहाँ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मन रखा पड़ो नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आदित्य L1 कैप्चर्स फास्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कॉर्नेल Indians Aditya L1 mission, the country's first dedicated solar observatory, has made groundbreaking discovery by capturing the first ever image of a solar flare kernel in the photosphere and chromosphere. मन रखा आदित्य L1 जोटा कि इंडिया रो आदित्य L1 कैप्चर्स द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नेल. नेक्स्ट पॉइंट Blue Ghost lands on the moon, a new era of private lunar mission. On March 3, 2025, Fairley Aerospace Blue Ghost successfully landed on moon. खाली नेम मन रखिए Blue Ghost lands on the moon, a new era of private lunar. Next point, Bose metal, a significant step in physics research. A Bose metal is a unusual गोटे metal टा मन रखिया पड़ो एटा Bose metal is an unusual metallic state where copper pair of electrons form but do not transit into a superconducting state, challenging traditional theories that metals should be either superconductor or insulator at absolute zero. Bose metal देखंतु Bose metal होची a significant step in physics research जोटा कि हमर हे परसी either superconductor or insulator at absolute zero. Next point, NASA IM2 mission pioneering lunar mining and 4G communication. NASA IM2 missions launched on February 2026 February 26, 2025 is a 10-day lunar exploration mission targeting Moon's mount at the lunar pole. It aims to mine water, ice, rare minerals essential for future lunar base and Mars mission. आउ एटा कौन करुच्ची नासार IM2 एटा आमर जो नोकियार 4G एंड LTE नेटवर्क को भी एनेबलिंग हाई स्पीड कम्युनिकेशन ऑन द मून कहीं नेक्स्ट जदि आमर फोन कम्युनिकेशन रमर रेयर मिनेराल्स वाटर रसेंशियल जिनस सब मून रे तो लोक जाकि यार थ्रू रे मून रे ना तो नासार IM2 मिशन. नेक्स्ट सुमित एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज Waves India, a bird's eye view challenge. The Waves India, a bird's eye view challenge is a part of Create India initiative aimed at capturing India's beauty and diversity through aerial cinematography, organized by Broadcast Engineering Consultants India Limited in collaboration with Minister of Information and Broadcasting. मन रखा पड़ो वेव्स इंडिया ए बर्ड्स आई व्यू चैलेंज का ऑर्गेनाइज्ड बाय किए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड विथ कोलैबोरेशन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. द कंपटीशन इनवाइट्स ड्रोन पायलट एंड फिल्म मेकर टू क्रिएट हाई क्वालिटी 2 to 3 minutes video showcasing India's landscape heritage and vibrant culture from a bird's eye perspective. Next point, important days. International
डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे मार्च 5 मन रखा वाज एस्टाब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो एटा थिला हमर 5 मार्च रो करेंट अफेयर। तो एटा मन रखिया को पड़िबो सब। तो रहुची जय जगन्नाथ।